प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस गस्तर द्वितीय दिन बास्टेल डे परेड रे सम्मानित अतिथि भाव जोग देइछन्ति पीएम मोदी। राष्ट्रपति माक्रोन द्विपाक्षिक संपर्क नहीं हेबा आलोचना। फोकस रे भारत फ्रांस प्रतिरक्षा डील। मंत्री नवदास हत्या घटना को नहीं दाखल चार्जसीट रु मिला पुओ विशाल को रेकर्ड बयान। बापा को प्री प्लान मर्डर देथिबा पूर्वरु कहिथिले विशाल। सेपटे नवम को मारिबा को लंडा हुई शपथ नेथिला हत्याकारी गोपाल। बीजेपी सांसद सुरेश पुजारी कहले चार्जसीट रद्दी कागज। भुवनेश्वर पड़ाशुणी और सत्संग विहार में खूब शीघ्र आरंभ हो फुट ओभर ब्रिज काम। बीजेपी सांसद अपराजिता षडंगी वार्षिक रिपोर्ट उपस्थापन करदे सूचना। भुवनेश्वर संसदीय क्षेत्र में चली 6462 कोटी काम। खोर्धा निशा माफिया हत्या घटना रे 6 गिरफ। मुख्य अभियुक्त संजय प्रधान समेत 6 जन को धरिला पुलिस। 4 माउजर 11 रन गुली सह 6टी 4 चकिया गाड़ी जबत। जून 8 रे सामंतरापुर छकरे घटिला हत्याकांड। पानी रे उबुटुबु अधारू अधिक दिल्ली रास्ता रे चलुछि आंठुए उच्चर पानी। आईटीओ लालकिला राजघाट रे पसिला जमुना पानी। नदीर जलस्तर सामान्य खसिथिले मध्य कमिनी दुर्दशा। सेनार सहायता लोडिले मुख्यमंत्री केजरीवाल। एवं रथयात्रा शेष पर आरंभ है रथ भंगा कार्य। प्रथमे देवी सुभद्रा दर्पदलन रथर भंगा कार्य आरंभ। कलशरू भंगा आरंभ होता बेले परे पाराभाड़ी द्वार बेढ़ा और 6 काठ भंगा पर अन्य 2 रथर आरंभ हो भंगा कार्य। अर्थबाउंड ग्रेविटी ऑर्बिट से मून तक जाएगा। ये होगा 1 अगस्त को। 1 अगस्त विल बी द ट्रांसल्यूनर इंजेक्शन गोइंग टू टेक प्लेस as per the nominal program. So we will have 4 earthbound maneuvers. After that it will have the lunar injection on 1st August. After that it will be captured in moon. Then it will become our orbit propulsion module, lander module separation will happen on 17th of August. So final powered descent and landing is currently planned on 23rd August at 5:47 Indian Standard Time evening. So that is the current. Everything goes normal from today to landing. That is the schedule. Okay. Thank you. Sir, first of all, congratulations to you. Continue. Check. Continue. Sir, first of all, many congratulations to you and huge funding from TV9 Bharatvarsh. My question is that after a successful launch, what is the challenges for next level? The soft landing is for you a primary concern or anything else? See, before launch our primary concern was to reach it in the right orbit. Anyway, that concern is now over. Okay, so further concern starts. So further concerns are then we have to slowly raise it to the Earth moon-bound orbit. That will happen in next 4 burns, which are scheduled. Then, as you know, it has to capture the moon. If it doesn't capture, moon mission is not there. So our calculation, I hope it will all be all right and it will be captured on moon. Then it will be an elliptical orbit. Then it has to be a 100-kilometer circular orbit. That's another 3-4 maneuvers. Then on the designated day, it has to reduce from 100 km to 30 km and then land on the moon precisely, soft landing. So all these regimes are equally critical. I don't think the landing alone is not critical. Every step is critical. So we wait for the next 42 days of work. Please watch us. We will update you on every step what we are going to do, whether it is successful or we have a problem. You will come to know. Thank you. Dr. Somnath? Yeah. Dr. Somnath? Please continue. Yeah, Dr. Somnath Pradhan Bajpai, who's in you say, मेरा सवाल इस चीज को लेकर है कि 4 साल के अंदर आपने अपनी असफलता को सफलता में बदलने की पूरी चेक तैयार की। उसमें आपकी टीम का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आप बता सकें कैसे इसरो ने इस चीज का रिजॉल्व लिया कि चंद्रयान 3 लॉन्च होगा और किस तरीके से वो मिशन जो है वो आगे बढ़ा, अगर आप टाइमलाइन बता सकें। ये तो बढ़िया क्वेश्चन है। हमारे 4 वर्ष का काम हम 4 मिनट में बताना है तो बढ़िया कष्ट होगा। तो मैं ये सिर्फ यह कहूंगा कि देयर वाज ए फेलियर फॉर अस। तो what you decided, find out what went wrong. First step, that took almost 1 year. Second step, what you can do, corrections are required to make it better. Then we looked at what more can go wrong. और कुछ भी problems है hidden रहते हैं उसमें, तो वो सब we brought out through reviews, testing, etc. Then the third year was all testing. We went on so many tests.
which was not done last time. And final year was final assembly and preparation. So it was a period of very great reviews, mental agonies, specimens, new equipments were realized, entire design was redone, software re-verified. We brought so many people to review our designs once again, and we did hundreds of tests last 2 years to prove that it is good today to go for launch. So it has been a big journey for the team. I have to congratulate the team sitting here, not me. There is a big team, thousands of people. I think we have to, maybe after this we will introduce them. Yeah, but I think Somanath is being very modest. It is not a failure. I mean, it would not be fair to say it was a failure, because if you go even statistically, most of the countries have not been able to successfully land in the first attempt. So, going by that comparative analysis, we are statistically better off than all the other countries. Our record of landing in the first attempt or in the second attempt, many others have landed successfully or absolutely only in the third or the fourth attempt. Having said that, it was also not a failure, because only last 12 kilometers you had some shortcomings which did not live up to your expectation. Actually, your expectation level was very high. You wanted to accomplish through that mission many things which possibly you could have kept off for the next mission, which did not happen. So it did not, the agenda envisaged by us could not get accomplished in its totality. So that was kind of a disappointment. But our lander is there, machine reached there, Orbiter is still there. So it's just like that. You board a vehicle or a transport bus. It takes you to the destination. It reaches there, but there is a jhatka in the brake, as you sometimes find in the landing of the aircraft. So it's not a failure, but it fell short of our envisaged agenda, which now they have not only supplement, and that is with every case. Even if it was successful from our point of view, we would have still learned from it, because even the successful mission gives you a hint about certain pitfalls, which you realize, okay, this went off well, but it should have not been like that. I could have done it this way. So every successive mission is an improvement of the earlier mission. And here you also had certain buffer components brought in, as Somanath ji is saying. I will also request you to look at the tweets of our Honorable Prime Minister Modi ji. He has given tweets on Chandrayaan 1, what it brought out, what was accomplishment of Chandrayaan 1. He also brought out tweet on Chandrayaan 2, what are the scientific outcome, the accomplishment of Chandrayaan 2, and also hoped that Chandrayaan 3 will go well. Kindly look at his last 2 days of tweets. He has brought out it very well. Thank you. Understand that the primary objective of the mission is to demonstrate a soft landing. But still, I would like to know from you, what were the thought process that went behind the choice of experiments that these instruments do? Why these experiments? No, that is an essential part of any mission. Experiments are different experiments. I mean, you have a suite of experiments to do. Why did you choose these three? See, experiments are chosen based on scientific objectives. We have a scientific team headed by one of our former chairman who looks at it. And in beginning of Chandrayaan program, there was a scientific goal set. What you want to find out, what is unique that you can find out, what others have not done. And that is how we found out water on the moon on Chandrayaan 1. Because in a way, not only is this mission comparatively better than many other missions by the other countries, also it is totally indigenous. And as we mentioned, Chandrayaan 1, though they may have landed before us, but the discovery of water on the surface of the moon was brought by Chandrayaan 1. Now this is going to go one step further, more so because it's landing on the south polar area, where you have different kinds of craters and all. So it's just moving from one level. He's abroad, he's treated, and that will work out. But of course, I have no hesitation to say that all this has been possible also because there's a huge lot of individual indulgence by Prime Minister Modi. This whole ecosystem has developed because in the last 4-5 years, beginning from opening the space sector to the private players, then putting in place an interface called InSpace to deal with the private sector, to coordinate with the private sector, then
putting up a PSU called New Space India Limited. So all this is an ecosystem which has supplemented the resources, both human resources as well as financial resources. Now the 140 odd startups, private startups who are working over here in collaboration with ISRO are also actually contributing, both human resource wise, because there's a huge lot of young talent happening there. So it's an ecosystem which has made this task easier. And that's also because the Prime Minister Modi has always been forthcoming as far as our experiments and missions are concerned. One second. You have to use the mic, otherwise we can't hear. Coming up next, brought to you by Arundhati Jewellers. Coming up next, brought to you by Arundhati Jewellers ro 5-star promise. Ame ଅଛୁ ନା? OTV Top 3 brought to you by Centurion University. brought to you by राघव का उड़ता मशीन है, मेड इन सेंचुरियन, सेंचुरियन यूनिवर्सिटी, लर्न द वर्ल्ड। Sarah, this is your space. Play your way. Admission open for 2023 postgraduate and undergraduate students at Birla Global University. Get quality education for a phenomenal learning curve. Apply now. हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। एलोवेरा रे अछि प्राकृतिक एलोवेरा और विटामिन ई रो उत्तमता। ये त्वचा को कराए कोमल रूबी कोमल। विवेल एलोवेरा। Text Headlines is brought to you by Kimchi Jewellers since 1936. Handcrafting blessings since 1936. Kimchi. See, ISRO has a treasure of technologies, and as these startups are coming up, it makes a lot of sense for them to not redevelop the technologies, and ISRO can transfer technologies to startups, and startups will take it and take it forward. And ISRO right now is very aggressively identifying technologies that they will transfer, and in this space is only facilitating the technology transfer. All the technologies will come from ISRO. Okay, yeah. Madam. My question is that now that the private sector is open for space, in this mission in Chandrayaan, the space is open for private sector. Not the private sector is open for space. What are the kind of key developments that the private sector industries have contributed for this mission? Can you name some critical components that were provided by them or some companies that were invaluable to this mission? If I start listing, it will be huge. Just a few, sir, just a few. Okay, the first thing to say is in the rocket which took place, that LVM-3 rocket,
85% of the money spent on the rocket is in industry. Okay, only the value of the rocket, just 15% of the work was done only within ISRO. This is first point. So to corroborate it, the entire materials, the entire manufacturing, everything that you are seeing outside the rocket, also inside the rocket, is also coming from industry. Only the processing part, final processing part, quality control, the mission design, the final operations only done by ISRO. Another thing is there are industries now working within ISRO's facilities now. It's called, our mission director used a word called GOCO, government owned company operated mode. There are many facilities operating to produce critical systems inside. Tomorrow they will go out and do it on their own. They are supplying. For example, in the RF systems that is there in this launch vehicle, 8 out of the 9 systems in this rocket is produced in private industries in GOCO mode. And many things in that are done in such facilities. So industry's contribution is very enormous. Coming to the Chandrayaan 3 also, the hardwares which are visibly there are, many of them are from industries, but the industry contribution in satellites are actually lower, not as much as the rocket today. So my question is, my question is, what is the cost of this project? And while many developed countries at the moment dominate this particular space, I'm on your right, sir. Where? I'm on your right. Go ahead. My question is, what's the cost of this project? And number 2, why many developed countries dominate this particular space, technology and expertise? No, I think the cost. Okay, you have a second part. ये इसरो पक्षर प्रेसमिट आपने देखिपे चंद्रयान 3 सफल उत्क्षेपण पर प्रेसमिट करा जाउतला। तो सफल उत्क्षेपण को नहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करछंती। चंद्रयान 3 सफल उत्क्षेपण महाकाश क्षेत्र में आउ एक माइल खुंट बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ट्वीट आपने देखिपे। समस्त इसरो टीम को से शुभेच्छा भी जणाइछंती। एपटे प्रत्येक भारतीय स्वप्न और अभिलाष को नहीं चंद्रयान 3 बोली मोदी ट्वीट माध्यम उल्लेख करछंती। महत्वपूर्ण उपलब्धि आम वैज्ञानिकों निरंतर उत्सर्गर उदाहरण मु यहां साल्यूट करुछु बोली प्रधानमंत्री ट्वीट माध्यम जणाइछंती। समय सरची बुलेटिन को एट रखुछु। नमस्कार। न्यूज ब्रॉट यू बाय स्कान स्टील्स लिमिटेड। Brought to you by Srishti PMT Chhada, a product of Scan Steels Limited. सह प्रायोजक प्रो लाइट अच्छा ठंडा। कौन सिंगड़ा हेची मौसी एने आवरी का अरे कोई पकुड़ी भी तने कौन पाकुड़ी हेची पियूसी जमी गला संडे आउ दियो ना ने ने ओह कोन हैला एसिडिटी यार उपचार अछि मो पाखे लेंबू पानी पी दे एथिरे तो टाइम लागिबो छाड़ गला संडे टाइम तो सहिबा को पड़िबो ना एते काहे की सहिबो एसिडिटी रु शीघ्र आराम पाई न अछि ना कारण इनो काम आरंभ करे मात्र 6 सेकंड रे। चलो संडे शॉपिंग चलो जल्दी दिन को मात्र 2 टंका विनिमय करी क्योर बे हेल्थ कार्ड टीए पांतु जहा द्वारा 80,000 टंका ऊर्ध्व स्वास्थ्य सेवा पांतु। दिन को 2 टंका हेल्थ कार्ड क्योर बे हेल्थ कार्ड द्वारा आपण गोटे वर्ष रे असीमित डाक्टर सेवा पाई परिबे आ मेडिकल रे एडमिट हेले दैनिक 1000 टंका हिसाब रे 30,000 टंका एवं गुरुतर रोग पई 50,000 टंका पाई। जो रोगी क्योर बे ई क्लिनिक आसी न परिबो क्योर बे रो स्वास्थ्य मित्र घरे पहुंची समस्त सुविधा जोगै देबे ताहले तो हमको शहर को जीवा को पड़िबनी। क्योर बे हेल्थ कार्ड दिन को मात्र 2 टंका रे। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। सवाल उठे एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस सब तक कैसे पहुंचेगी, हमने पहुंचा दी। कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं।
एई नियंतु आपनकर प्रेगनेंसी टेस्ट किट भाई लोकन को याडू साडू किट नुहे इंडिया रो नंबर 1 प्रेगनेंसी टेस्ट किट प्रेगा न्यूज दियो जहां ऊपर अछि डॉक्टर्स आउ कोटी कोटी महिलांकर विश्वास। थैंक यू। प्रेगा न्यूज द्वारा मिले 99% सटीक रिजल्ट 5 मिनिट रे ताबी केबे भी केउठी भी मिस होइथिबा डेट को कर नाही वेट। प्रेगा न्यूज माने गुड न्यूज। नमस्कार ओडिशा रोग पाई जोग कार्यक्रम को मु अशोक आपण को स्वागत जनाऊँगी। आज आम सहित अच्छा रोजालिन। दर्शक बंधु आज आम आमर एकाग्रता एवं मन को किभली भाव में प्रफुल्ल रखिपर से विषय किसी आलोकपात करवा एवं योगाभ्यास करवा। से आसन गुड़िक भितर प्रथम आसनटी आज आम करवा दर्शक बंधु पर्वत ससंगासन। पर्वत आसन रहीकि ससंगासन करवा। रोजालिन एवं आम से पोस्चर को स्टार्ट करवा। धीरे धीरे आमर सुखासन एवं पद्मासन आम निवृत्त होगा एवं पर्वतासन पोस्चर रे रहिबा। आसन रे धीरे धीरे दुई गोड़र पाद को संपूर्ण भूमि उपर रखिबा। दुई हाथर पंजा को संपूर्ण भूमि उपर रखिबा। मुंड को तळमुहा करके रखिबा। पर्वतासन एबे हम धीरे धीरे पर्वतासन रो आसीबा ससंगासन। धीरे धीरे दुई आंठू को भांगिबा एवं बॉडी को स्ट्रेच करवा एवं दुई हाथ को रखिबा भूमि उपर। मुंड को रखिबा भूमि उपर। किछि समय होल्ड करके रखिबा। श्वास प्रश्वास गति को जारी रखिबा एवं धीरे धीरे रोजालिन आम आउ थे पुनर्बार प्रयास करवा। धीरे धीरे आम पुनर्बार पर्वतासन स्थिति रही किसी समय होल्ड करके रखिबा। मुंड को झुला अवस्था रखिबा। दुई हाथर पंजा एवं पाद संपूर्ण भाव रमर भूमि उपर। आमर नितंब को संपूर्ण ऊपर को उठेक रखिबा। गोड़ सीधा रहिबो, हाथ सीधा रहिबो एवं धीरे धीरे एबे आम आमर ससंगासन अवस्था को आसीबा। दुई आंठू को भांगी दबा एवं आमर मस्तक एवं आमर हाथ को रखिबा भूमि उपर। किछि समय होल्ड करके रहबा एवं धीरे धीरे प्राणवायु को भीतर को नहीं आम पूर्व स्थिति की फेरी आसीबा। रोजालिन तुम्हें एभली आउरी 4 ରୁ 5 चक्र भी करिपरिबो। एही पर्वत ससंगासन पोस्चरटी को जदि आम प्रत्येक दिन सकाळे एवं संध्या बेले मिनिमम 1 ରୁ 2 मिनिट करवा। सकाळे 2 ରୁ 3 थर एवं संध्या बेले भी 2 ରୁ 3 थर करवा। ताले आसनटी करवा फल आमर कौन होता है आमको शांति प्राप्त होता है। ससंगासन रे आम करुचे पर्वतासन एवं पर्वतासन रो फिर आम आसुचे ससंगासन। ये आसन जदि आपण मैंने प्रत्येक दिन करुँच ताले आमर टोटाल हाथ एवं गोड़ उपर संपूर्ण प्रभाव पड़ा व्यतीत हाथ फुला एवं पाद फुला रोगरू आमको मुक्ति मिलता है एवं यह व्यतीत आमर मेरुदंड को शक्तिशाली रखी था। एकाग्रता बढ़ी था। मन मध्य प्रफुल्लता जारी होता है। कि प्रत्येक दिन जदि आपण मैंने आसनटी को करुँच आसनटी करने फल आमर ज्ञान तंतु मंडल में शक्ति उत्पन्न होता है एवं आपण मैंने जदि आसनटी करेंगे ताहले आसनटी करने फल आमर नित्य व्यवहार्य रूपक जदि आपण मैंने आसनटी को करुँच ताहले आसनटी करने फल आमर गुदार शिथिलता दूर होता है एवं आमर रक्त प्रवाह भल भाव में होई श्वसन संस्थान में उन्नति परिलक्षित होता है। अंतरे थिबा विभिन्न प्रकार रोग गुड़िक दूर होता है एवं आम शरीर आभ्यंतरण अंशरे थिबा कोष गुड़िक शक्तिशाली होई स्नायुतंत्र एवं शरीर तंत्र को सतेज शक्तिशाली एवं सक्रिय रखी था। तेणु प्रत्येक दिन जदि आपण मैंने ये आसनटी को करुँच पर्वत ससंगासन ताले निश्चित पक्षे आमर एकाग्रता बढ़िया व्यतीत आम शरीर को आम शक्तिशाली करिपरिबा एवं मन मध्य प्रफुल्लता जागृत करिपरिबा। तो रोजालिन एबे आम धीरे धीरे आमर पर्वत ससंगासन को एबे आम समाप्त करवा एवं धीरे धीरे पूर्व स्थिति की फेरी आसवा। पद्मासन एवं किंबा सुखासन एवं आम रेस्ट नवा। तो यहाँ थिला दर्शक बंधु आमर पर्वत ससंगासन। एवं आम द्वितीय पोस्चरटी करवा। द्वितीय पोस्चरटी होची ऊर्ध्व हस्त प्रपादासन। तो एवं आम से पोस्चरटी करवा ऊर्ध्व हस्त प्रपादासन। धीरे धीरे रोजालिन एवं आम सुखासन एवं पद्मासन निवृत्त होगा एवं आमर दुई गोड़र आंगुठी माध्यम आम शरीर संपूर्ण भार को रखा। आमर दुई गोड़र गोईठी को जोड़ीदेवा एवं दुई हाथ को क्रॉस करवा एवं ऊपर को उठेगा। धीरे 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 संपूर्ण एकाग्रता आसी थाए। मन मध्य प्रफुल्लता जागृत होता है। आम जो टिके इनबालांस हो आमर शरीर एपट सेपट हो जाए। तेणु प्रत्येक दिन जदि आपण मैंने आसनटी को करुँच निश्चित पक्षे आमर संपूर्ण शरीर में एवं मन मध्य एकाग्रता सृष्टि होता है। जदि चाहिपर आम धीरे धीरे आमर ऊपर को अनै पार हाथर पापुली को
संपूर्ण भाव में निजर शरीर को एकाग्रता भाव रखिपर और धीरे धीरे एवं आम आमर प्राणवायु को भितर को नहीं ऊपर को हाथ उठे आम प्राणवायु को बाहर को छाड़ी धीरे धीरे एवं आम दुई हाथ को पूर्व स्थिति की नहीं आसवा और नमस्कार मुद्रा रखा ऊर्ध हस्त प्रपादासन ये आसन जदि प्रत्येक दिन दर्शक बंधु आपण मैंने करेंगे तो निश्चित पक्षे आम मध्य संपूर्ण शक्तिर विकास होता है और यह व्यतीत जो मानकर कामना एवं बासना मन रही है ये सब कामना बासनारू आमको मुक्ति मिलता है यौनाचार रोगरू आमको मुक्ति मिलता है और यह व्यतीत आमर पिठी अंटा नितंब कटी संधि जंत्रणा को संपूर्ण भाव में दूर करें और आसन जब आपमर गला पीड़ा छाती पीड़ा स्कंद पीड़ारू आमको मुक्ति मिलता है और प्रत्येक दिन जब आपने आसन करेंगे ताहले आमर पीड़ा नाड़ी और पिंगड़ा नाड़ी उपर सुप्रभाव पड़ता है जोटा कि आम कहूँ चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी उपर सुप्रभाव पड़ी और आमर चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी उपर सुप्रभाव पड़ी आमर सुषुम्ना नाड़ी उपर संपूर्ण प्रभाव पड़ता है तेणु प्रत्येक दिन जब आप सकाଳେ और संध्या बेले एमटी स्टोमाक ये सब आसन गुड़िक करेंगे तो निश्चित पक्षे आमर हाथ गोड़ को आम शक्तिशाली करने व्यतीत आमर टोटाल आमर एकाग्रता जागृत होता है और मन मध्य एक प्रफुल्लता निवास करें प्रत्येक दिन आपण मैंने आसन टी करूँ और मन को प्रफुल्ल रखुँ और एकाग्रता आणतु तेज आम ये पोस्चरटी धीरे धीरे निवृत्त होगा दर्शक बंधु एवं तृतीय पोस्चरटी करवा तृतीय पोस्चरटी है आमर पार्श्व लघु योग मुद्रासन आम तो पूर्व सीरीज गुड़िकर लघु योग मुद्रासन करें आज आम करवा पार्श्व लघु योग मुद्रासन तो धीरे धीरे आम करवा लघु योग मुद्रासन तापर करवा पार्श्व लघु योग मुद्रासन तो धीरे धीरे एवं आम रोजालिन आमर पद्मासन रेस्ट नवा बाम गोड़ को भांगा डाहाण गोड़र जंघ उपर रखा डाहाण गोड़ आंठ को भांगा और आमर डाहाण गोड़र पाद को बाम गोड़र जंघ उपर रखा और धीरे धीरे दुई हाथ को क्रॉस करदे और धीरे धीरे आमर प्राणवायु को बाहर को छाड़ी धीरे धीरे आमर हाथ और आमर चिन ओठ को भूमि उपर स्पर्श करवा और धीरे धीरे आमर मस्तक को भूमि उपर रखा कहवाक गले आमर मस्तक को आम भूमि उपर रखा फोर हेड को कपाल को और धीरे धीरे आम प्राणवायु को भितर को नहीं एवं आम पूर्व स्थिति की फेरी आसवा धीरे धीरे दुई हाथ को ऊपर को उठेबा और पूर्व स्थिति की फेरी आसवा यहाँ थी आमर लघु योग मुद्रासन एवं आम रोजालिन करवा पार्श्व लघु योग मुद्रासन धीरे धीरे आम से ठीक से आमर साइड को पलि आसवा धीरे धीरे दुई हाथ को एवं आमर पार्श्व को नहीं आसवा बाम पट को और धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर को छाड़ी एवं आमर मस्तक को रखा आंठु पाखे श्वास प्रश्वास भल भाव में जारी रखा और धीरे धीरे आमर प्राणवायु को भितर को नहीं आम पूर्व स्थिति की फेरी आसवा ठीक से ही आम रोजालिन डाहाण पट साइड करवा धीरे धीरे प्राणवायु को बाहर को नवा प्राण बाहर को छाड़ा और धीरे धीरे आमर दुई हाथ को और आमर मस्तक को टच करवा दुई हाथ को रखा भूमि उपर और मस्तक को रखा पूरा आंठु उपर डाहाण गोड़र आंठु उपर और तापर रोजालिन आम धीरे धीरे आमर प्राणवायु को भितर को नहीं आम पूर्व स्थिति की फेरी आसवा ठीक यही रोजालिन तुम्हें प्रथम कर फ्रंट रे करिवो लघु योग मुद्रासन तापर पार्श्व रे करिवो बाम पट पार्श्व रे करिवो पार्श्व लघु योग मुद्रासन एवं डाहाण पट रे मध्य करि परिवो पार्श्व लघु योग मुद्रासन दर्शक बंधु जदि आपण माने प्रत्येक दिन एई आसन गुडी को करिवे संपूर्ण पक्षरे कहबा बेले आमर हाथर पंझा उपरे सुप्रभाव पड़िया व्यतीत आमर पेल्भिस एवं आमर संपूर्ण पेट उपरे मध्य सुप्रभाव पड़ी थाए तो आज एतिकी परवर्ती अध्याय रे आमे किसी नुआ योगाभ्यास एवं प्राणायाम सहित आपण सहित देखा रहुचु जय गुरुदेव जय महर्षि नमस्कार। नमस्कार मु पूजा बदलुछि समय बदलुछि अभ्यास ओटीवी डिजिटल से विश्वास लेटेस्ट न्यूज अपडेट पाई आम चैनल और वेबसाइट को लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर मु गारंटी देखौछि प्राइस स्टाइल क्राफ्ट सबुठो आगरे श्री ऑर्नामेंट सह प्रायोजक गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज भुवनेश्वर ओडिशा।
खोला कथा को स्वागत करुच्ची मु मनोरंजन दर्शक बंधु सांप्रतिक राज्य राजनीति रे कहार चली राज कहीं कौन पाई और केमिति जड़े सचिव सर्वशक्तिमान सर्वविद्यमान ये विरोधी अभियोग आउ सचिव विरोध रे कार्यानुष्ठान नवापाई मुख्य शासन सचिव पाखक केन्द्र चिठी आसी हेले नो एक्शन नो रिएक्शन सतरे राज्य रे राजनैतिक देवालिया परिस्थिति हो जाइए कि ए संपर्क में आलोचना करने आज खोला कथार हॉट सीट रे पूर्वतन मुख्य शासन सचिव तथा वर्तमान वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रचार कमिटीर मुख्य श्रीयुक्त विजय पट्टनायक नमस्कार खोला कथा को स्वागत। सांप्रतिक राजनीति को केमती देखते ओडिशार कारण आप पाखर देखी राजनीति को वर्तमान जो प्रकार राजनीति आम देखुचे से आम लक्ष्य करुचे जे बीजेडी दल शासक दल वर्तमान संपूर्ण भाव में शासन कल को अख्तियार कर नहीं ये स्वाभाविक 5 वर्षर सरकार करछंती आ शासक दल तो शासन कल को अख्तियार करेंगे ना विरोधी स्पेस नहीं शासक दल शासन कल को व्यवहार करिपरिबो नाही निजर दलीय कार्य पाई मोर कहबार उद्देश्य होछि सिया जे जो माने सरकारी कल अछंती से माने सरकारंकर जहा नीति नियम ताको पालन करिया पाई अछंती सेथिरे द्विमत नाही किंतु सरकारी दल पाई सरकारी कल व्यवहार करिवा एटा संपूर्ण भाव सर को जाय नहीं राजनीति और प्रेमरे सब किछि संभव राजनीति तो अलगा जिनस मु कहूछि जो अमलतांत्रिक व्यवहार जो तांकर निजर जो डिसिप्लिन रही से डिसिप्लिन को से उल्लंघन करने कथा ना आपण तो निजे